Our top focus at this moment, over 1,600 fresh dengue cases have been reported in the last 1 week in the capital, and the death toll is inching closer to 40. And while the Delhi government claims that all government and private hospitals are well equipped to deal with the increasing pressure of dengue patients, India Today's investigation has revealed that the situation on the ground is completely different. Over 6,000 positive cases and more than 30 deaths. Stung by dengue, hospitals in the capital are struggling to cope with the pressure of patients. And while the Delhi government claims that government hospitals are well equipped, an India Today special investigation has revealed the complete opposite. इस टाइम पे ब्लड के बहुत पेशेंट आ रहे हैं ना 4,000 1 unit. At Delhi's Ambedkar Hospital, relatives of dengue patients have been waiting to get blood units for the past 2 days. When India Today's team went to the blood bank, they were refused, point blank. कल से बैठे हैं, दे भी दिया, उनको भी नहीं मिल रहा है। हम लोग पैसे मिल रहे हैं। आपने दिया कब दिया? कल का दिया हुआ है। कल खून दिया है आप? हम लोग बिल्कुल बनाने पूरे ब्लड दे दीजिए, मिल जाएगा। कल किस तारीख? 22 टाइम भी देखो। तो हम लोग कैसे मिल जाएगा? तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि मिल जाएगा। तो आपने कब खून दे रखा है? कल का दिया हुआ रात का। पेशेंट अभी तक खून नहीं, पेशेंट नीचे एडमिट है। महावीरा में ना। तो हुआ क्या? डेंगू। तो अभी तो खून मिला ही नहीं। 3 में से 1 दिया, 2 रह गए। As patients and their families struggle, touts are out, trying to feed off their misery, looking to make a quick buck. At the Loknayak Jaiprakash Hospital, Aman promised to help us for 4,000 rupees. अरे भैया, डेंगू पेशेंट में तो डेंगू पेशेंट को क्या करें? पर्चा लेके आना पड़ेगा। बिना पर्चा का तो बात करते हैं। अच्छा, पर्चा कैसे मिल पाएगा खून के? मतलब क्या रेट है? कैसे मिलता है, क्या सारी बता दूं? पैसा हम तो पैसा लेके भी तो आएंगे ना, तो फ्री में मिलेगा कि गजब बतिया रहे हैं। फ्री में दवाई डॉक्टर देंगे, हम तो दे नहीं सकते हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, कितने पैसे लगेगा? 4,000 रुपये लगते हैं। हाँ, हमारा बंदा जाएगा, पेशेंट के रिश्तेदार बन के रिलेटिव समझते हो? हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो? हिंदी में। पेशेंट का रिश्तेदार बन के हमारा बंदा जाएगा, वो वहाँ देगा, वहाँ से एक कार्ड आता है, जैसे बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, चेक आता है, वैसे ही आएगा। उसमें देने वाले का नाम आता, पता होंगे, उसकी ID लगती है। जब कार्ड देंगे, बाकी पैसे लिया जाता है। पहले 500-1000 रुपये एडवांस दिया जाता है। तो वो मैं गया तो वहाँ बता रहे वो फिर खून चेक भी होगा कि खून सही है? उससे कोई मतलब नहीं, वो तो चेक होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? तो आप देंगे खून? वो देने वाले की छोड़ो, आम खाओ, गुड्डी मत गिनो। इसके शरीर में खून आया, काम है आपको? फोन करा, मैंने कुछ ज़्यादा ही काम है। ये सरकारी ब्लड नहीं, खून सही मिलेगा ना? ब्लड सरकारी ब्लड में कुछ मिलेगा? जो हमारा बंदा देगा, वो ब्लड आपको नहीं मिलेगा। जो आपको पेशेंट को जो ग्रुप होगा, आपको वहाँ से वही मिलेगा। ये तो ब्लड बैंक से मिलेगा ना? हाँ जी। तो 4,000 रुपया? 4,000 एक की। At Deen Dayal Hospital as well, a tout at a medical store right across the hospital promised us 1 unit of blood for 4,000 rupees. आज नहीं चाहिए ना? अरे नहीं चाहिए तो परेशान क्यों हूँ आपके पीछे? दे दो, बाकी दे दूँगा। हैं? आप क्या लाना, क्या पर्ची लाना? ब्लड सैंपल लाना है, ठीक है? उसके बाद अलाउ किया हुआ पेपर लेना है, बस। और क्या लेना है? कुछ नहीं लेना है। 50-500 अलाउ किया हुआ पेपर, अलाउेट लिखा रहेगा। उसके बाद सैंपल ले लेना है, बस, और कुछ नहीं। पैसा कितना? 4,000 1 यूनिट। 1 यूनिट पर यूनिट। तो हमको एक तो अपना वो क्या कहते हैं, वो नंबर क्या कहते हैं, वो
क्या क्या लिखना है? ब्लड सैंपल बंद हो गया, ब्लड सैंपल और पेपर लेना है, अलाउ किया हुआ है, बाहर से अलाउ किया हुआ है। एक पर यूनिट चार्ज 4000 रुपये बस। 3 घंटे का समय देना है आपको, जिस समय ला के दोगे पैसा। ऑथेंटिसिटी पूरी होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी पूरी। हाँ, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ओके होकर के सारा चीज आएगा, लेकिन रिटर्निंग नहीं है। जब आपको क्लियर हो जाएगा 100% कि हाँ सही है, फिर या चढ़े या ना चढ़े, रिटर्निंग नहीं है। लाएंगे कैसे? ब्लड बैंक से लाएंगे? हाँ, तो और कहाँ से लाएंगे, अपने घर थोड़ी होता है सर। ठीक है ना, यही चीज़ बता रहा हूँ। India Today's investigation team did a status check at a private hospital in the capital too. The Delhi government has ordered all private hospitals to admit and treat dengue patients. But at Janakpuri Super Speciality Hospital, we were told that only patients with mild fever were being admitted. पेशेंट प्राइवेट में इसको यहाँ शिफ्ट करना था, तो डेंगू का है, यहाँ ब्लड मिलती है? नहीं, ब्लड नहीं। तो ब्लड के लिए कैसे कर, कहाँ दिन जा? तो यहाँ किस तरह का पेशेंट? यहाँ पे स्टेबल पेशेंट होगा तो ये नहीं, DDO सर्टिफाई यहाँ करते हैं सर। नहीं स्टेबल मतलब ठीक ठाक हो तो कौन सा नंबर? ठीक है, ब्लड के लिए नहीं है ठीक ठाक मतलब खाली फीवर ओवर रहेगा, हल्का फुल्का? हाँ, हल्का फुल्का। प्लेटलेट 1 लाख तक पहुँचा। अच्छा, 1 लाख तक प्लेटलेट रहेगा तभी आ रहा है। हाँ, इसको तो मतलब ही नहीं। हाँ, यहाँ पे शाम को तो यहाँ पर ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो कैसे करेंगे? अरे नहीं है भाई साहब, ब्लड नहीं, दिन जाल जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, खाली आई फ्लूइड लगेंगे, कुछ नहीं, मतलब ब्लड की सुविधा नहीं है। Helpless patients and their hapless relatives running from pillar to post, arranging something as basic and as critical as blood. With Arvind Oja and Vishwas Kumar in Delhi, this is the India Today Special Investigation Team. All right, we've got renowned physician Dr. Sanjeev Bagai with us. Dr. Bagai, how do you look at this particular investigation? Because, you know, this punches holes in the entire claim of the administration that all is well, everything has been taken care of. Well, things turn out to be quite the opposite. My suggestion has always been for a long time in various shows so far, not only this year but even in the past few years, is that there has to be a rationalization of pricing in all private hospitals. You have a variation from 0 to 300% between different hospitals. I can understand if the variation is 5%, 10% plus minus. But if the variation goes 300% up and down, it obviously leaves a question mark in patients' minds. Point number 2, with regards blood products or specified blood products like platelets or WBC-rich plasma or any other product, there has to be rationalization of rates, including for ambulance services. So overall in Delhi, the healthcare services, everything is running amok. One private hospital is pulling the cart in one direction and the other in another direction. There has to be a proper approach. You are given a bandwidth. So your room rents can vary from this rate to this rate, but it can't vary according to hotel rates. Absolutely. Dr. Sanjeev Bagai, also a word on the way the blood touts are operating, because at a point like this, when there are dengue patients, the one thing that they need is, you know, easy access to blood. I mean, if you ask me as a one-liner, I think they should be jailed, jailed for life. There are two aspects to it. One is the ethical and moral aspect in which patients who are in moments of crisis and who need help are being blackmailed, if that's the correct word. Point number 2 is we lose control on the safety of blood transfusions. I must add that, you know, the risk factors of blood transfusions are still there. There is a risk of infection, risk of carrying viral infections through these unauthorized touts which keep floating around. The bloods must be procured from authorized blood banks from major hospitals or private blood banks which have licenses in order. If this is not adhered to, you will suddenly see an upsurge in the next 5 years, 10 years of infections which could have very well been avoided. And the touts who are operating
I think they should be earmarked, they should be highlighted, and they should be shamed and put in jail. Dr. Sanjeev Bagai, many thanks for joining us.